Students, welcome once again to the Awal Academy of Education. In today's video, we are going to discuss here with ICIC class 8 maths. Lesson is 12 and book is again by Foundation Mathematics by Professor R.S. Agarwal, published by Goyal Brothers Prakashan. Right? Lesson is lesson 12th. Chapter is here it has cut, यहाँ ये कट गया है. तो chapter is 12 fundamental of concepts and operations on algebraic expressions. Right? So students, first question in your book is exercise 12a. We are going to start here with exercise 12a. Question is, first identify monomials, binomials and trinomials from the following. Right students? So अगर हमने ये जानना है कि इनमें से कौन से मोनोमियल्स, विच ऑफ देम आर मोनोमियल्स, बायनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स, then we have to do our basics, right? So I will explain you here what are monomials. An algebraic expression containing one term, only one term. The monomials are having only one term, right? For example, I can write 5x and minus 6z square. These are all terms, all one terms, right? So 43 upon 2 AB, right, are all monomials. These are all monomials, right students? Now I am going to tell you binomial. Algebraic expressions having two terms are called binomials. For example, here 5x plus 3z, two terms, they are binomials. And 2xy minus 3z, having two terms, 2xy and minus 3z, right? If I write a square b minus 3b square c, it is also a binomial having two terms, this and this. Now students, we will discuss trinomial. What are trinomials? Having three terms. Algebraic expressions having three terms, right? So three terms are, for example, I am writing here x plus 2y minus 3z is having three terms, x, 2y and minus 3z, so it is a trinomial, right? If I write z square minus 2x upon y minus 27, it is also a trinomial having three terms. So three terms are z square, 2x upon minus 2x upon y and minus 27, right students? So I am going to now wrap this so as to explain you the question first in your book of exercise 12a. Identify the binomials
monomials, binomials, and trinomials from this, right? So first is question first part A. What has been written here is half a square b square c square. So it is having only one term without any sign of positive negative, so it is a monomial, right? And second, 7x multiplied y square z square, so it is also a monomial, though a sign of 7x multiplied y square into z square, no sorry z cube, when we are going to, जब इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 7xy square z cube, so it has become only one term, it is a monomial, right? हमारा मतलब यहाँ पे प्लस माइनस आने से है, तब अगर यहाँ पे प्लस या माइनस होता तो ये ट्राइनोमियल बन जाता, राइट? नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मूव हियर इज 9x cube upon z. It is also having only one term, so it is also monomial, right? Part 4 is having plus between the two terms, sign of positive plus between the two terms, so it is a one term is here, one term is here, so part 4 is a binomial, right? Fifth is also having two terms, a upon 3 plus b upon 6 and a positive sign here, plus sign here, so it is also a binomial. सो इनके बीच में, दो टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस का साइन आने पर ही हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मोनोमियल है और बाइनोमियल है और ट्राइनोमियल है, ठीक है बच्चों? इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। सो फिफ्थ सिक्स देखिए, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, सो थ्री टर्म्स हैविंग प्लस साइन इन बिटवीन देम, सो इट इज अ ट्राइनोमियल। Right, now we will move on to 7th question. Number 7th is also having this sign of negative, this sign of positive and three terms, so this is also a trinomial. Part 8 is having this 8, so I can write it 8a upon 9b minus 2 square b square, so यहाँ पे माइनस आया है इन दो टर्म्स के बीच में, इसके और इसके, सो इट इज ए बायोनोमियल, बाइनोमियल, बायो नहीं बाइनोमियल, राइट स्टूडेंट्स? नाउ जो 9th है, आप देखिए इसको, 9th पार्ट, इसमें कितने हैं? 7x क्यूब प्लस 2y प्लस 1, सो 1 2 और 3, दो साइन आगे प्लस के बीच में, सो इट इज ए ट्राइनोमियल, तीन टर्म्स होगी ट्राइनोमियल, राइट? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम इसको करेंगे रब थोड़ा स्पेस बनाने के लिए। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो क्वेश्चन नंबर 2 is what? Write the numerical and literal coefficients of each of the following terms. Numerical and literal coefficients of the following terms. So what are numerical and literal coefficients?
So in suppose I write this question number 2 part first, minus 7x square y. So what is the numerical coefficient? In a term, the numeric factor attached to the variables is called its numerical coefficient. So here the numerical coefficient is this 7 minus 7. So numerical coefficient is minus 7, and the literal coefficient is, what is the literal coefficient? In a term, the non-numeric factor consisting of the variables of a term is literal coefficient, right? So here literal coefficient is x square y, right students? So these are numerical and literal coefficient. Now we will move on to the second part. Here in second part, what is the numerical coefficient? Numerical coefficient is what? Pi, this, and literal coefficient is r square. In the third, numerical coefficient is minus 3 upon 8, and literal coefficient is bcx. In the fourth, numerical coefficient is 2 upon 3, literal coefficient is a. In the fifth, numerical coefficient is, you are seeing here, so this would become, फिफ्थ में ये हो जाएगा 5 upon 5a square b and divided by 2c. So अगर हम इसका जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इसको अलग करेंगे तो ये बन जाएगा 5/2 इंटू ए स्क्वायर बी अपॉन सी. सो ये जो है इसका बन गया न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट और ये बन गया लिटरल कोएफिशिएंट. ठीक है. और सिक्स्थ में जो ये बन जाएगा आपका -7/9 एंड पी क्यू अपॉन एक्स वाई. तो ये बन गया न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, ये बन गया लिटरल कोएफिशिएंट, राइट. तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो write down coefficients of the x square minus yz 3/5xyz and minus x square y, right. So इसमें क्या है कि question 3 first. Here it is asking coefficient of x square. So x square, here is x cube. तो हमने लिटल न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट तो ले ही लेना है. अब इस x क्यूब में से ये x स्क्वायर यहाँ पे निकल गया तो बचा क्या? x स्क्वायर, y स्क्वायर, z पूरा आ जाएगा, राइट. सो ये पूरा जो है कोएफिशिएंट किसके बन गए? ये x के. अब सेकंड पार्ट में वो पूछ रहा है माइनस वाई जेड का कोएफिशिएंट क्या है. तो यहाँ पे हम माइनस वाई जेड जो है छोड़ देंगे, बाकी सारा पोर्शन ले लेंगे. तो ये रह गया माइनस एक्सक्लूडिंग माइनस. तो यहाँ पे क्या बना? फिर माइनस छोड़ देंगे. 3/5 वाई स्क्वायर जेड, सॉरी माइनस वाई जेड छोड़ने के लिए कह रहा है तो एक्स स्क्वायर पूरा आ गया
y में से एक y यहाँ पे चला गया तो ये y एंड z इज पूरा यहाँ पे आ गया। तो हेयर द कोफिशिएंट इज दिस कोफिशिएंट ऑफ y माइनस yz। अब वो थर्ड पार्ट में 3/5 xy/z का कोफिशिएंट पूछ रहा है। तो इसमें से हमने सो माइनस बचा है, 3/y छोड़ देंगे, माइनस बचाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा एंड एक्स वाई निकल गया तो यहाँ पे एक्स क्यूब है तो एक्स स्क्वायर रह गया, वाई स्क्वायर में से y निकल गया तो y रह गया और z का z निकल गया। तो ये रह गया हमारा माइनस एक्स स्क्वायर वाई। कोफिशिएंट ऑफ 3/5 xyz इज माइनस एक्स स्क्वायर वाई। एंड फोर्थ में माइनस एक्स स्क्वायर वाई। सो यहाँ से हमने माइनस एक्स स्क्वायर वाई निकाल देना है। तो बचा क्या, माइनस निकल गया तो 3/5 बच गया न्यूमेरिकल उसमें, और एक्स क्यूब में से एक्स निकल गया, एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर निकल गया तो क्या बचा यहाँ पे, तो एक्स बचा, और वाई स्क्वायर में से वाई निकल गया, वाई बचा, और जेड आया नहीं है तो ये पूरा आ गया। राइट, तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है ये यहाँ पे, आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ लाइक टर्म्स। आइडेंटिफाई the pairs of like terms. What are like terms? The terms having the same literal coefficients. The like terms are the terms having same literal coefficient. Right, like terms. ये लाइक टर्म्स की डेफिनेशन है, टर्म्स हैविंग सेम लिटरल कोएफिशिएंट्स। सो अब बच्चों इसमें से हमने जो निकालना है लाइक टर्म्स। सो अब देखिए अगर हम फर्स्ट में चलें तो ये है x/2 और ये है -x/3। यहाँ पे भले ही माइनस आया है पर इसका जो है लिटरल कोफिशिएंट सेम है xx, सो इट इज़ ए लाइक टर्म। फर्स्ट हो गई आपकी, यहीं पे लिख दूँ मैं लाइक टर्म। और सेकंड, अब सेकंड में देखिए न्यूमेरिकल कोफिशिएंट सेम 6। अब यहाँ पे जो लिटरल है यहाँ पे है a स्क्वायर, यहाँ पे है a, यहाँ पे है b स्क्वायर, यहाँ पे है b, यहाँ पे है c, तो ये जो है एक लाइक टर्म नहीं हुई। राइट, सो अब इस पे देखिए यहाँ पे है पी क्यू, यहाँ पे है क्यू एक्स, सो पी गायब है तो पी इज नॉट देयर, सो ये भी नहीं है। फोर्थ में देखिए ए स्क्वायर -2/a स्क्वायर, सो यहाँ पे जो लिटरल कोफिशिएंट है आपका ए स्क्वायर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर, सो इट इज़ ए लाइक टर्म। राइट, अब यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, इट इज़ नॉट। यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर p, यहाँ पे पी वाई स्क्वायर k, पाई पी वाई स्क्वायर x इज सेम, y स्क्वायर इज आल्सो सेम एंड p इज आल्सो सेम, सो इट इज़ अ लाइक टर्म। राइट बच्चों, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। अब हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। क्वेश्चन नंबर 5। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। सो बच्चों, चिल्ड्रन आपको you should know before doing this question you should know the definition of polynomial. So what are polynomials? Polynomials, the algebraic expression in which variables involved have only non-negative integral powers.
So an algebraic expression, right, in which the variables involved have only non-negative integral powers is called a polynomial, right? So for example, if I write 7a cube minus a square minus 5a plus 3, so is it a polynomial? Yes, definitely. The variables involved have only non-negative integral powers, non-negative powers. It is having 1, so it is a polynomial, right? So now we will do question number 5. So I will do it here. Question number 5. So let us move on to first. Is it a polynomial? Is it a polynomial? Yes, it is a polynomial because it is only power plus 1, right? So now we will move on to second. Is it a polynomial? Yes, it is also it is a polynomial. Question 3. Is it a polynomial? This is not a polynomial because it is having a root, right? A root is not considered a polynomial. Now fourth, x minus 1 upon x, a polynomial? No, because of this it is not a polynomial. Question part 5th, x square plus this root, this is root, so it is also not a polynomial. These both are not polynomials. 6th, is it has positive powers, so it is a polynomial, right? 7th, it is not having the literal, so it is not a polynomial, literal number. 8th, it is a polynomial. Yes, it is in positive powers, so it is a polynomial. Question 9th, is it a polynomial? Yes, because root is only on root 3, it is not on the little number x, so it is a polynomial, right? 10th, is it a polynomial? It is not a polynomial because root is over y, so it is not a polynomial. Is it a polynomial? No, it is not a polynomial because root is on y. Whenever root is on natural number, it is not a polynomial. Whenever the power is in minus like this, when we solve this 1 upon x, when x go above, it will become, its power will become minus 1. So it is not a polynomial, right? Now degree of the polynomial. What is degree of polynomial? So highest power of the variable in polynomial of one variable is called the degree of polynomials. So in the sixth question we have to find the degree of each polynomial. So here 2 minus x is having power what? X raised to power 1. So 1 is its degree, so 1 is answer, power 1 degree, right? Second,
highest degree is 3 of x, so its degree is 3. Highest power is 3. Here highest power is 2, so its degree would be 2. Here highest power is 3, so degree would be 3. Here highest power is 4, so degree would be 4. Here highest power is also 4. Here highest power is 5, so degree is 5. Here highest power is 2, so degree is also 2. Here highest power is 6 of t, so degree would be 6. So here sorry 10th, so it's 5 raised to power, it has not any little number, so its power would be 0, degree would be 0, so 0, right? So 11th highest degree is 2, power is 2, not minus 2, 2, right? So here highest degree is 3, so power would be 3, right students? So now we will move on to the next, that is question number 7. Write the degree of each of the following polynomials. So here is degree of each of the polynomials. Students, here degree is 1, here degree highest power is 2, here degree highest power is 2, I am saying 2, here highest power is 5, here highest power is 2, here highest power is 2, degree is 2, right? Now I am going to solve question 8. Find the value of 4x cube minus 3x square plus 5x minus 6 when x is equal to 3. So we are going to get this equation 1, put x equal to 3 in equation 1. Equation 1 is here. We will हम x की यहाँ पे रख देंगे 3, 4x 3 raised to power 3 minus 3 in place of x we will put 3. So this would become 3 3 ja 9 3 ja 27, 27 4 ja 108, right? 3 3 ja 9 3 ja 27 plus 5 3 ja 15 minus 6. So add plus with plus, 108 plus 15 133 and 133 minus 27 plus 3 33. We will get what? Here is 108 plus 15 123 minus 23 we will get 90. So this is same, part 2 is same as above. So it is your homework, do it at home
If you face any problem, please don't hesitate to write us in the comment section. Now we will move on to question number 9. If a equal to 4 and b equal to 5, then find of. So this I am going to solve here. So a equal to 4, b equal to 5. We have to find the value of a cube plus b cube minus 3a square, it's a square b plus 3ab square. So I am going to this as equation 1, put values of a and b in equation 1, right? So what is equation 1? Here we will put 4 in place of a, 4 cube, plus 5 in place of b, 5 cube, minus 3, 4 square into b is 5 plus 3, 4 into b. 4 4 ja 16, 4 ja 64, 5 5 ja 25, 125 minus 4 4 ja 16, 3 ja 48, 48 into 5, 48 into 5 here, 8 5 ja 40, 5 4 ja 20 plus 4 24 plus 5 4 ja 20 plus 23 ja 60. So this is our plus, this is our plus, this is our plus. So add them. 60 plus 64, 124, 124, 60 plus 64, 124 plus 125, 249 minus 240. So here it is b square. So we have to rub this and this. So here would become 5 5 25, 25 for the 100, it would become 300, right students? So I am going to rub this right. So 300 plus 125, 425, 425 plus 64, 948 minus 240. Our answer would be 249. Keep it in mind. Here it is square. So we have done this and अब हम आगे चलेंगे, इसको रब करेंगे. Question number 10. So question 10 is just like solution 10. Let me solve part first. X equal to 4, y equal to 3, z equal to -2. हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz. तो इसको दे देंगे इक्वेशन 1. पुट वैल्यूज ऑफ x, y and z in equation first. So x की जगह पे हम क्या लिख देंगे? 4 स्क्वायर. y की जगह पे हम लिख देंगे 3 स्क्वायर और z की जगह पे हम लिख देंगे -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x की जगह पे 4, y की जगह पे 3, z की जगह पे -2. तो कितना बन गया? 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 प्लस
सॉरी यहाँ पे ये माइनस है तो ये भी माइनस का बन गया। तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 2 जा 48। So 16 plus 9, 25 plus 16 plus 9, 25 plus 4, 29 minus 48. So our answer would be minus 90, right? Part second is just like part first. So part second is your home work. Do it at your home. Now we move on to next question, that is question number 11. Right, state whether each of the following statements is true or false and rewrite the false statements. So 7x plus y is the same as 7xy. No, it is has written wrong, it is false, right? So 7x plus y equal to 7x plus y. No, it is not, right? The both are different. Now we will move on to second. Here 3x multiplied 2p is a trinomial. So second I am going to solve here. So when I do 3x into 2p, it will become 6xp upon 5q. So is it a trinomial? No, it is a binomial. Monomial. No, it is a monomial. Now third, 2xy plus 3yx plus 8yz. Is it a binomial or what? Xy y is third, xy plus yx plus yz. Is it a binomial? It is false, it is a trinomial, right? Now we will move on to fourth, 8p square qq are equal to 8pq pq square r q. क्या ये इसके बराबर है? यहाँ पर p स्क्वायर है, यहाँ पर अकेला p है, यहाँ पर q है, यहाँ पर अकेला, यहाँ पे q स्क्वायर है, यहाँ पे r है, यहाँ पे r q है. So it is not equal to this. So this statement is also false. Now fifth is a monomial. 3x square y plus x square is a monomial. Yes, both have single term, so it is a monomial. It is true. Now sixth, 9p multiplied q plus 5r is a trinomial. It is false because this is only a single term, so it is false. Minus 3ab square plus 4cab square is a trinomial. Nine b square is a trinomial. All are having single term with b square ac, so it is a false. It is a monomial, right? Eighth is a trinomial. X square yz. X, it is having three different terms with three different signs, so it is a trinomial. It is true, right? Ninth, minus 7p square plus 7p square q. And this is p, this is p square, q square q equal to 0. No, this is not equal to 0, so it is false, right? Is it a binomial? 9x divided by xy, so it will become 9x upon 8y. So it is a monomial, so it is false. This is monomial. So
students, this was your exercise 12th A, right? So we are now going to end it here. If you have understood well, अगर आपने इसको अच्छी तरह समझा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि your other friends can also be helped. So we will meet in the next video with some new topic. Till then, it's goodbye.